ओम शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे। और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हम लोग विशेष विश्वनाथ जी से बातचीत करने वाले हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विश्वनाथ दलवी। और आप विशेष प्रोफेसर हैं केमिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ मुंबई, जहाँ पर आप अपनी सेवा देते हैं। और जब भी बात करते हैं केमिकल की तो कुछ चीज़ें हमारे दिलो दिमाग में आ जाती हैं कि कुछ रिसर्च चीज़ें चल रही हों या लोगों के लिए कुछ अच्छा काम हो रहे हों, तो इस तरह की बातें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। और मोस्टली चीज़ें जो है केमिकल चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो है प्लस माइनस होती जाती है वो भी याद आ जाती है, फार्मूलास याद आ जाते हैं हमें। तो निश्चित तौर पे आपको लग रहा होगा कि ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम लोग जो बातें करने वाले हैं बहुत ही यूनिक चीज़ें जो है किस तरह से हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन कुछ यूनिक चीज़ें जो है हमारे लाइफ को बेहतर करती हैं। तो वो लाइफ को बेहतर करने के लिए कौन-सी चीज़ें ज़रूरी हैं उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। और निश्चित तौर पे आप सभी को भी अच्छा लगेगा। और बिल्डिंग वेल्थ ऑफ द नेशन थ्रू द साइंटिफिक मेथड, ये विश्वनाथ जी ने बताया कि कैसे हम लोग अपने समाज को जो है समृद्ध बना सकते हैं एक वैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि हर तरीका जो है अपने आप में काम करने पर उसके जो है फलस्वरूप हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन जब आप साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो एक बात मन में आता है कि गारंटेड आपको रिजल्ट मिलेगा। वो चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाकर। तो आइए, विश्वनाथ दलवी सर का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। विश्वनाथ जी कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, बिल्कुल ठीक हो, थैंक यू। तो चलिए, आज हम लोग आपसे काफ़ी कुछ सीखेंगे, समझेंगे। और मैं चाहूँगा कि एमी कुलकर्णी हमारे साथ हैं और आपके स्वागत में एक बहुत ही खूबसूरत गीत लेकर हमारे बीच में पहुँचे हैं। एमी, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे, जब यूं ही आंखें, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे, जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए
तू कैसे आए. वंडरफुल. चलिए अमित जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया, बहुत ही अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं करता हूँ। ये चंद तालियां आपके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए मैं सीधे आपको वापस जोड़ना चाहूँगा विश्वनाथ दलवी सर से। विश्वनाथ सर, बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और विषय से कि हम लोग जिस विषय को लेकर बातें करेंगे, लोगों के लिए थोड़ा सा यूनिक भी रहेगा और काम की चीज़ें होती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना? हाँ हाँ, absolutely. तो आज हम लोग, जैसे कि आपको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं, विशेष ईश्वरीय बेस्ट टीचर अवार्ड भी आपको मिला है। और विश्वेश्वरैया को हम लोग सब जानते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी प्रयोग किया और विशेष ब्रिज बनाने का जो तरीका या उनका जो इंजीनियरिंग में जो काम उन्होंने किया है, भारत को एक बहुत बड़ा माइलस्टोन इस्टेब्लिश किया है और भारत में एक ऐसा मास्टरपीस उनको कहा जाएगा जो पूरे ही दुनिया उनको कॉपी करती है अपनी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो आइए आज टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर बात करें भारत देश की, तो भारत देश में बहुत गरीबी है, जबकि रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा है। तो ये कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी हो जाता है कि भई इतने सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, लेकिन उसको वो फिर भी माँग रहा है, तो ऐसी चीज़ हो जाती है। तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं वो अ, प्रॉब्लम किधर है या ब्रिजिंग क्यों नहीं हो रहा है, जबकि उस व्यक्ति के पास पैसे हैं, तो उसको उसके पैसे से खर्चा करना चाहिए ना, तो वो माँग क्यों रहा है? क्या रीज़न है इसके पीछे का? वो हम चाहेंगे कि हाँ, आपसे जानें। आप बहुत सही बोली, यू आर एब्सोल्युटली राइट. भारत में रिसोर्सेज की बिल्कुल कमी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए, इरिगेटेड लैंड इरिगेटेड लैंड और एरेबल लैंड, यानी जहाँ फसल उगी जाती है, हुँ, हुँ, हुँ। वी आर द we have the largest uh, we have the most arable land of any nation in the world. When we say, जब वंदे मातरम में बोलते हैं सुजलाम सुफलाम, बिल्कुल। दिस इज लिटरली ट्रू. ये ये सही है. सुजलाम सुफलाम, ये देश पानी है, फर्टाइल लैंड है, हवामान एकदम पौधों के लिए सटीक है. तो सो why we are rich, we are very rich, but our riches are of a particular type. तो आप कल्पना कीजिए, एक आदमी है, उसके पास एक बहुत बड़ी अलमारी है, और इस हुँ। लोहे की अलमारी है, उसके अंदर सोना भरा हुआ है, और उसकी चाबी उसके पास नहीं है. तो वो आदमी आदमी तो बहुत ही अमीर, कहने तो एकदम अमीर कह बोल सकते हो, कहे तो कंगाल बोल सकते हो. तो so the key is, so what is this key, ये चाबी कौन सी है? So that वो that key is the scientific method. And there are countries with far fewer resources. Israel, desert. Japan, mountains. um, Singapore, nothing. And they are fabulously wealthy. And the difference is, take the countries of Europe, say Germany, absolutely frozen for half the year. Half the year, nothing grows. One growing season. Canada, one growing season. And they are unimaginably wealthy. We cannot even imagine the sort of wealth these countries command. As an example, um,
when I was a um, when I was a sort of minimum wage worker in the United States. I was a graduate student, which is a master PhD student, minimum wage worker. Um, I used to make what is an engineer salary in in Bombay, engineer salary in Bombay as a minimum wage worker in the United States. So Hmm. this discrepancy in wealth is real. Yes, such. So we have a we are potentially very wealthy. हमारे पास अ, हमारे पास कैसे बोल सकते हैं, आपने सही शब्द का प्रयोग किया. हमारे पास दौलत है पर समृद्धि नहीं. हमारे पास उस अलमारी की चाबी नहीं है, या है. ऐसा ऐसा नहीं कि नहीं है, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते. इस्तेमाल नहीं करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात सही लग रहा है कि हम लोग तो वो चाबी भी है, दरवाज़ा भी है और सब कुछ है, लेकिन हम लोग कभी उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो यूज़ करने का तरीका क्या है, वही मुझे लगता है कि साइंटिफिक मेथड है। तो मैं चाहूँगा कि हाँ, आज वो रहस्य बता ही दें ताकि हम लोग अपनी चाबी का इस्तेमाल इस करके ये अपने और जीवन को कमाल की बात है समृद्ध कि बनाएँ। रहस्य नहीं है ये. ये तो सदियों से हमारे पूर्वजों को मालूम था. अ, हमें हमें मालूम होना चाहिए, हुँ, हमें सिखाया जाना चाहिए, पर कुछ क्या अलग अलग कारणों की वजह से हमें सिखाया नहीं जाता. ये साइंटिफिक मेथड क्या है, हम हमारे एक क्या नहीं है बताता हूँ. ये साइंटिफिक साइंस is not something that is done in universities and technological institutes. That is not where science is done. If that is the only place where science is done, we get into the situation that we are in now. If science is done in an ivory tower, if science is done in a university, uh, it would be, it's not science. Something is wrong. If something is really wrong, if and I'll tell you a really good example of what is wrong. It is important to know what is wrong before we know what is right. After 10th standard, there are three streams. One is called science, one is called arts, and one is called commerce. कॉमर्स। Art, science, commerce. सबको मालूम. Three streams. This is a fallacy. That हुँ, stream called science should not be a separate stream. It should pervade the entire education system. You should employ science in the arts. You should employ the scientific method in commerce. You should employ the scientific method in um, home finance. For example, um, here is an example, a very simple example. A lot of people make a mistake here. You're living in Mumbai. You have a or anyway, Pune, Mumbai, Nagpur, Ahmedabad, uh, Ahmednagar. हुँ, Um, हुँ, you have a certain salary, तनख्वाह है. अब ये तनख्वाह खर्चा वगैरह सब होता है तो कुछ बचत रहती है. Something is saved. हुँ, Should you invest it in the stock market, or should you purchase a house on loan and pay EMI? Now EMI in most places is twice the rent. EMI is twice the rent. जितना किराया है उसका दुगना ईएमआई होता है. इतना किराया दुगना ईएमआई. तो ये जो फर्क है किराए ईएमआई में, ये फर्क हम स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो करना चाहिए या नहीं? घर खरीदे
या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें? हम्म, इसका जवाब कैसे दोगे? तो तो इसका जवाब इंट्यूटिवली नहीं दे सकते. जी. ये बहुत क्या बोलते हैं, बहुत अहम सवाल है. अ, अ, इसका करोड़ों में अगर सवाल का जवाब गलत दिया तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है, सही दिया तो करोड़ों का फायदा हो सकता है. बहुत अहम सवाल है. और ये किसी अमीरजादे का बात नहीं कर रहे हैं हम. मध्यम वर्गीय नागरिक की बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास पर्सन. The decision he makes or she makes on this point can make a difference of crores, literally crores in wealth after 30 years. Now, how do you make this decision? Do you make this decision on the basis of intuition? Do you make this decision on the basis of your friend's advice? Do you make this decision on the basis of financial advisor's advice, or uh, just what you think? You maybe a lot of people make this decision without really thinking. The idea is get a job, get get a job, get a wife or get a husband, and get a house, and just um, and maybe get a car afterwards. But just uh, uh, auto, what is it called? Uh, that thinking is aut- not autopilot thinking. Just हम्म, हम्म. thinking like an automaton, not thinking like a person with agency, who can make decisions. निर्णय ले सकते हैं. So this is a decision to make, and this decision has to be made quantitatively, which is you have to. And nowadays it is very easy to do that. The calculations involved are not difficult, and you have tools like Excel which do the calculations for you in no time at all. And when you put everything down, what do you find? What do you find? The decision is not as straightforward as buying the house. If you're willing to endure a certain amount of risk and uncertainty, मतलब किराए पे घर लिया तो किराया बढ़ सकता है. हर 11 महीने शायद घर बदलना पड़ता है. दूसरा घर मिलने की शाश्वती हमेशा नहीं होती. बट इफ यू लिव इन ए सिटी लाइक Bombay, where there's a surfeit of houses. In a city like Bombay, Pune, or in some interior, where there's a lot of houses. You're never going to. There are a lot more people willing to rent than people than there are renters, and you can manage the risks. It makes a lot more sense to rent than to buy. And take the difference, invest it in the stock market early, and at the end of your career आपके पास इतनी पूंजी होगी कि आप एक मकान भी खरीद सकते हो, और अ, अच्छा जीवन जीने के लिए जो बची हुई पूंजी रहती है वो भी आप, यू हैव अ नेस्ट एट द एंड ऑफ इट. So this is the calculation that you do, that you can do by yourself. You don't really have to do anything special. So all it needs is the understanding that it is a decision you have to make. It's not a decision made for you. It is a decision. ये निर्णय आपको लेना है. आपको किसी से पूछ के ये कदम उठाना नहीं है.
ये निर्णय आपको लेना है. It is your decision. So um, if you take charge of your life and then you employ the scientific method, essentially quantitativeness, it can make a difference of literally crores in your life. So um, in your lifestyle. The so and there are number of other things. So we will get into that uh, as we speak. बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए विश्वनाथ जी, एक बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप जब नौकरी लग जाता है, तो निश्चित तौर पे आप चाहते हैं कि एक मकान हो, है ना? सब कुछ हो, लेकिन उसके साथ में आप जिस तरह से वो चीज़ें जैसे मकान ज़रूरी है, गाड़ी ज़रूरी है, परिवार ज़रूरी है, उन सभी चीज़ों को ज़रूरी समझ के उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। वैसे ही आप इन्वेस्टमेंट भी शेयर मार्केट में ऐसे कीजिए थोड़ा स्टडी करके, तो आपके लिए वो बहुत बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। जब आप पूरी तरह से 20-30 साल के बाद आप देखेंगे, तो निश्चित तौर पे आपके पास वो ट्रेज़र खुला हुआ मिलेगा आपके पास। जो बंद था वो ओपन हो जाएगा और आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी जिसके लिए आप जिसको आप सोचते हैं। आप चाहे मकान खरीदो, आप चाहे ज़मीन खरीदो, आप चाहे गाड़ी खरीदो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये आपने बताया। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो मुझे लगता है कि इसके लिए आपको बहुत बड़ा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, थोड़ा-सा रिस्क फैक्टर समझ के आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। इस तरह से हर चीज़ के लिए हम रिस्क लेते ही हैं, गाँव से शहर में आ जाते हैं और शहर में आकर हम लोग बस जाते हैं, तो अपने गाँव का क्या होगा ये सोचते नहीं, थोड़ा रिस्क ले ही लेते हैं 30-40 साल के लिए। तो वैसे ही आपको ये भी रिस्क लेना है ताकि आप एक छोटा सा स्टडी करके मिनिमम आप उन पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको रिटर्न में काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ये एक की है जहाँ से आपको बहुत सारा अमाउंट मिल सकता है। इसके साथ ही एक और बात पूछना चाहूँगा विश्वनाथ जी आपसे कि आपको बहुत सारे बेस्ट टीचर अवार्ड्स मिले हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से भी मिले हैं और ऑल इंडिया काउंसिल से भी आपको अवार्ड मिला है। तो इस अवार्ड्स के लिए आपने क्या किया था? कैसे आपने काम किया? कैसे आपको ये चीज़ें मिली? थोड़ा-सा बताइए। तो बहुत बहुत या बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. बेस्ट टीचर मुझे ये 2016 में मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया. उसमें अम, अ, अच्छा टीचर, बेस्ट टीचर वगैरह कुछ नहीं, अच्छा टीचर बनने के लिए क्या का राज उन्होंने बताया. बहुत आसान है. विश योर स्टूडेंट्स वेल. बस उनकी तरक्की, उनकी उनकी भलाई दिल से चाहो. अब और कुछ करने की जरूरत नहीं. आप अपने आप अच्छे टीचर बन जाते हो. अगर बच्चे आपके दोस्त हैं, बहुत मेरे बारे में भी ये सही था. मेरे पहले कुछ सालों में बच्चे मेरे दुश्मन थे. दुश्मन का मतलब उनके मैं उनके साथ जूझता था. मतलब the relationship was adversarial in the sense I expected them to behave badly in some way or other, cheat in exams, not attend class, or talk while classing, or some stupid thing like that. I expected them. I was sort of paranoid about their intentions. And then after this orientation program, I just changed my attitude. I said, these are the future of the country. देश का भविष्य है. If I want the country to, if I if I am a if I wish my country well, these are my country essentially. बाद में जाके यही लोग देश बनने वाले. देश तो लोगों से बनता है. So these are my country. Not only are they my country, they are the gems of my country in the sense they are one of the very best things the country has to offer. And then um, you you change your attitude from adversarial to affection, to um, uh, you no longer see them as your enemies, you see them as your comrades. And what is the
साथी, वो साथी बन जाते हैं आपके. एंड व्हाट इज द comrades for what? What is the struggle? Struggle is against poverty. The struggle is to build wealth, and there is a tremendous amount of wealth that can be built if these gems of our nation are taught to deploy the scientific method. And we'll go into that a little bit more afterwards. What is the scientific method? We actually haven't defined the scientific method, which we बिल्कुल, should. बिल्कुल। Uh, but if these uh, this brilliant future of our nation is taught the scientific method, our nation will become brilliant. Future of a nation is going to be brilliant. So essentially, the relationship towards students changes from adversarial to one of comradeship, and then बिल्कुल। you really don't have to do anything. Things just happen. The change happens within you. Just wish your students well, and and you wish them well, and that's all that is needed. It's really that simple. That simple does not mean easy. It is simple, not necessarily easy, but simple. चलिए, विश्वनाथ जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि बच्चों को जो है प्यार से अगर आप समझाना शुरू करेंगे, तो चीज़ें अच्छी हो जाएगी। बच्चों को पढ़ाना आपको जो है एक टेक्निकली चीज़ें जो है थोड़े दिनों के बाद समझ में आ जाता है। शुरू-शुरू में आप चीज़ें जो करते हैं, वो शायद बच्चे समझ पाएँ, नहीं समझ पाएँ। लेकिन धीरे-धीरे अगर आप बच्चों को स्टडी करते हैं और एक सिंपल टेक्निक के माध्यम से आप बच्चों का जो है दिल जीत लें और फिर उनको पढ़ाना शुरू करें, तो निश्चित तौर पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एज़ अ टीचर आपको ये चीज़ें आ जाना चाहिए और ये चीज़ें जब आप कर लेते हो तो बाकी सब चीज़ें आसान हो जाती हैं, आपने ऐसा कहा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और साइंटिफिक जो मेथड है वेल्थ के लिए वो क्या है? मैं चाहूँगा कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक मेथड फॉर वेल्थ? तो लेट्स तो पहले बोलते हैं, ये समृद्धि मतलब क्या है? What is wealth? So the definition of sort of wealth, there are a lot of definitions, of course. I'll tell you what it is not, and then we'll go into what it is. जी, Um, uh, this is what it is not. Wealth is not money. I'll tell you what money is. Money is command of other people's labor. That's all money is. What is money? Money is command of another person's labor, other people's labor. So whatever you can only buy one thing with money. By the way, you think you can buy a lot of things with money. You buy only one thing. You buy another person's labor. So whatever can be done by a person's labor, किसी के मेहनत से जो भी हो सकता है, जो भी हासिल हो सकता है, वो पैसों से खरीदा जा सकता है. किसी की मेहनत, पैसा यानी दूसरों की मेहनत, ये ध्यान में रखना. पैसा यानी दूसरों की मेहनत. अच्छा। अगर आप बीमार हो तो डॉक्टर और नर्स की मेहनत. अगर आप हुँ, कुछ सीखना हो तो शिक्षक की मेहनत. अगर आपको मकान बनाना है तो गवंडी की मेहनत. कि अगर आपको तो आप समझ गए. अब आपको अ, फसल चाहिए तो किसान की मेहनत. ये हम पैसों से खरीदते, पर सिर्फ मेहनत खरीदते हैं. हुँ, पर हुँ, हुँ। समृद्धि सिर्फ आदमी की मेहनत नहीं है. सूरज की किरणें समृद्धि है. हवा, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, ये समृद्धि है. बायोडाइवर्सिटी एक बहुत बड़ी समृद्धि है. हमारी अम, अ, हमारे बच्चे तो बहुत ही बड़ी समृद्धि है. हमारा भविष्य, भविष्य के बारे में आशा होना, होप फॉर द फ्यूचर, दैट इज प्रॉस्पेरिटी, दैट इज वेल्थ. The ability
the idea that you have the opportunity to reach your potential is wealth. These are the um, being able to sleep at night without fearing harm is wealth. बिल्कुल, बिल्कुल। So now so where so some of it comes from the efforts of others, so that you can buy with money. Some of it is essentially God given. The sun is God given. No amount of human effort can give you the sun. No amount of human effort will uh, make the Ganga flow, for instance. The Ganga flows entirely because of the cyclic, because of the water cycle, and that is entirely God given. No amount of human effort makes rainfall. No amount of human effort will ripen a mango. None, nothing. You can nurture a mango tree, but it will give mangoes on its own terms. So wealth is essentially, so money is what wealth is not. What is wealth? Wealth is what gives rise to well-being, friends, family, nature, uh, good food, biodiversity, uh, clean environment, uh, safe surroundings. Now, some of it comes from the labor of others, some of it is God given. All of it together is wealth. We also have cultural wealth, the inheritance of our forefathers, जो हमें wars that we have inherited from our forefathers, the stories, Ramayana, Mahabharata, the Purans. These are the songs of the poets, poet saints, and so on. These are this is wealth. The access to them is wealth. Now, so this is what wealth is. This is, and so India is very rich in many of these things, especially the cultural aspect. India is not very rich in the monetary aspect. So we are poor monetarily. We are very rich um, in these other aspects. Now, so we can't Indians can't command the efforts of other people. Indians are poor in that way. We can't command the efforts of other people. In fact, other people can command our efforts. So when you say an American is very rich, an American engineer makes 5 or 10 times what an Indian engineer makes. What it means is he can command the efforts of 5 or 10 times what an Indian engineer can. So this is a discrepancy. Now, how can we change this? This is the second thing. How can we change this? We can change this with the scientific method. So, what is the scientific method? The scientific method is something really simple, not easy, but very simple. And simple in the sense it begins with something very simple, at the same time extremely hard. It हुँ, begins with humility, namrata. If you don't have humility, you're not a scientist. There are a lot of scientists who had humility in the beginning, became great scientists, lost that humility, and stopped being scientists. As soon as you lose humility, you're no longer a scientist, you're a dogmatist. The key to science is humility. You always have to keep that first. And what does humility say? You have the humility to say, I don't know. First thing. Humility to say, मुझे मालूम नहीं है. Second thing, there has to be a childlike desire to know. मुझे मालूम नहीं है, मैं जानना चाहता हूं.
Then you have to observe without prejudice. Observe without prejudice. Humility to say, I don't know. Vulnerability to say, I desire to know. The ability to observe without prejudice. The discipline to document, लिख लेना, your observations. The discipline to document your observations. Once you have these, you can now take a you can now take a small risk. You can do a you can This is the fun part. So you say, I don't know, I desire to know, I observe without prejudice, I document with discipline. Do all these things, and now once you have a collection of documentation, that is called your research. This is research. Once you have this research, next step is the fun step. You have to analyze it and make a hypothesis. This is the fun step. This is You can look at what you have seen and postulate a theory, a hypothesis that explains all your observations. Now the observations have been done without prejudice. You make a hypothesis that explains, and then you think of an experiment that will test the hypothesis. You are not In none of these steps have you allowed your preconceived biases to interfere. In fact, you have taken great care that your preconceived biases do not interfere. In the same way, you can we'll come back to an illustrative example later on. But you make an hypothesis, you design an experiment to test the hypothesis, and you have the courage and humility to see the experiment fail, because fail it will. And then you revise the hypothesis. You say, you go back and say, I don't know, I desire to know, I will observe more, I'll make a different hypothesis, I will design a different experiment. Now, the hypothesis is a courageously made hypothesis. It's a hypothesis that is courageously made in the sense it can be proved wrong. It can be proved wrong. It is a falsifiable hypothesis. So you need humility. You need a childlike desire. You need um, courage, and that brings you back to humility. And again and again and again and again. So that gives you perseverance. So you go humility, courage, discipline, creativity to create the experiment, courage to see it fail, perseverance to start again, and keep doing that, and you become a scientist. Stop doing that, no longer a scientist. You may hold the post of a scientist, you may be called a professor or whatever, but once you stop doing this, you're a dogmatist, no longer a scientist. Now let us illustrate this with the rent example that we had in the very beginning. Rent or buy? Rent or buy? Make a hypothesis. I everybody uh, Everybody buys the house. Ownership of house is a mark of status. Therefore, I should buy a house. Not humble, not courageous, not vulnerable. Hypothesis, humility. I don't know whether to rent or to buy. Begin. Second step.
observe what happens, and then ask questions, of course. Observations is essentially us looking for answers to questions. What happens if I rent? What happens if I buy? Now, there is something that was not available to people before, but is available to people now, and that is the ability to run a simulation. What is a simulation? You run through 30 years of your life in 5 minutes. That is a simulation. So you make a model in Excel or something, mathematical model, and the mathematical model allows you to see, say, what your net worth will be in 30 years if you take this course or that course. And you run through the model, look at the answer. So maybe your hypothesis in the beginning was, I have to buy the house because everybody else does that. I have to buy the house. You go through your model, and it turns out that maybe it's a good idea to rent. So your hypothesis, so your model has challenged your hypothesis. Now, if you were a dogmatist, you would say, I will, I will buy if it kills me. That is a dogmatist. That is a fanatic. The scientist will say, the result of my simulation or the experiment point to the fact that we should rent, and therefore I will rent no matter what anybody says. Because what so if you take this approach to life to life, you will lead a more prosperous life. If you if we just stop being all of us dogmatists, all dogmatists. You have to identify that we are dogmatists. You have to assume you're dogmatists, identify your dogmas, and test them. That is the scientific method. Very, very simple. Very, very simple example. I think my neighbor or coworker, let's say coworker. I think my coworker is working against me. My coworker is jealous of me and is working to bring me down. Okay, that is my hypothesis. Humility says I don't know. Vulnerability says I desire to know. Then you observe without prejudice. Observe the actions of the coworker. Is he acting like a person who wants to bring you down? Make a hypothesis. Yeah, he's acting like a person who wants to bring me down. If I were in his place, I would have done this to bring me down. Has he done it, or has he spoken behind your back? Has he um, has he lied about you? Has he uh, not recommended you for something, or has he done the opposite of all these things? And once he has done this, once you see that he has done the opposite, have the courage to be sorry. You don't have to go and revise your hypothesis. My coworker is not against me. So when somebody so this method works everywhere. It is a it is the greatest cultural achievement of mankind, the scientific method, and this is all it is. You don't have to have an advanced degree in science to be a scientist. All you have to do is have the courage, the humility, the the humility, the vulnerability, the observation without prejudice, the uh, creativity to design experiments, the discipline to document, the discipline to document your observations, the courage to accept your hypothesis failing, and the humility to start all over again. So you have a method which has the potential
to unlock this key. And I'll give you one example of a treasure that lies in the country. India is a massive agricultural power, and we produce more than enough crops to feed ourselves. बहुत फसल बनती है. And there is a lot of agricultural residue that is left over, and a lot of people burn it. And we see this problem in Delhi because of the burning of fields in Haryana and Punjab. The energy locked in that agricultural residue can offset as much as half the fuel imports of India. हम कितना ईंधन आयात करते हैं, आधा ईंधन ये सिर्फ फसल निकालने के बाद जो कूड़ा बचता है उसका सही तरीके से प्रोसेसिंग किया तो आधा ईंधन निकल जाए. What that means is the wealth that we are transferring to foreign countries can be transferred to our own farmers. Imagine that $100 million we can send every year straight to our farmers. Imagine the prosperity that will well from that bottom of the pyramid if we were able to monetize our agricultural residue. Now, this monetization of the agricultural residue, there's no technology for it right now. No effective technology. But if we develop one, if we develop a scientific method, if you have the humility to accept that we don't know, the vulnerability to desire to know, the discipline to document our observations, and the courage to accept failure in experiments, we can find a solution. We can find this key that will unlock at least this part of our wealth. So that's just one of the vast arrays of potential that is there in India. So we can become a very, very prosperous nation if you use a scientific method. बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया विश्वनाथ जी। मुझे लगता है कि हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है कि साइंटिफिक मेथड क्या है वेल्थ के लिए, और वेल्थ क्या है ये आपने पहले समझा कि वेल्थ हमारे लिए मनी नहीं है, पैसा नहीं है। हम लोग वेल्थ शब्द यूज़ करते ही तुरंत पैसा कैलकुलेशन शुरू हो जाता है। तो वो आपने बिल्कुल सही कहा कि वेल्थ माना वैसे नहीं कि आप सिर्फ पैसे को ही वेल्थ माने। वेल्थ माना आप अपने आप को जाने कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, आपके पास जो पोटेंशियल है, आपका घर है रहने के लिए, आप अच्छे फैमिली के साथ रहते हो और उनके साथ मिक्सअप होकर रहते हो, और आपके पास जो एमिनिटीज़ है, खेती है, कल्याण है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसका सदुपयोग करके हम अपने वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे आपने फिर उदाहरण दिया खेती के बारे में, किसानों के बारे में, तो हमारे भारत देश एक ऐसा रिसोर्स है किसान खेती का, जहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग वैरायटी ऑफ फसल हम लोग लेते हैं। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और आपने कहा इसमें जो वेस्ट रह जाता है बाद में फसल निकालने के बाद, फसल की कटाई के बाद जो अवशेष रहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा वेल्थ है, वो भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसको अगर हम लोग प्रॉपरली साइंटिफिक वे से अगर उसको यूटिलाइज़ किया जाए, तो वो बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, जिसका अमाउंट आपने 100 बिलियन से ऐसा कुछ बताया। तो निश्चित तौर पे हमें थोड़ा-सा और वर्कआउट करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा साइंटिफिक चीज़ों को यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर प्रॉपर वे में चीज़ें यूज़ करना हम लोग शुरू करें, तो चीज़ें आसान हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी सस्ती और अच्छी खेती कर सकते हैं। बस उन तक वो चीज़ें पहुँचाना और उनको समझाना ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अभी हाल ही में बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं,
और प्रैक्टिस भी कुछ लोग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अभी जैसे शुगर केन का फ्यूल बनना शुरू हो गया है, ग्रीन फ्यूल बन गया है, तो वो एक बहुत बड़ा एसेट, वो बहुत बड़ा एक चेंज लेके आ जाएगा। पेट्रोल का जो है अल्टरनेटिव हो जाएगा, और इससे गाड़ियाँ जब शुरू हो जाएगी, बाइक्स और गाड़ियाँ जब चालू हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा एसेट हमारे लिए होगा। और भारत देश में ये जो ऑर्गेनिक फूड बनेगा और इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हम लोग जो है, एक तो पर्यावरण की बचत हम लोग सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। पर्यावरण में फूल के कारण जो चीज़ें हो रही हैं, जो मुश्किलें आ रही हैं, वो तो सबसे पहला ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, इकोनॉमिकली हम लोग स्ट्रॉन्ग भी होंगे। पेट्रोल के मुकाबले ये आधा कीमत पड़ जाता है। तो ये चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत बड़ा एक नया जो है परिवर्तन लेके आ जाएगा, एक बहुत बड़ा डायनेमिक चेंज लेके आएगा, और ख़ास करके किसानों को पैसा मिलेगा इसके माध्यम से। पेट्रोल के लिए जो पैसे बाहर जाते थे, पेट्रोल खरीदे जाते हैं, जो भी इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल का जो भी चीज़ है, वो पैसे तो हम लोग बाहर इम्पोर्ट हो जाता है, क्योंकि बाहर से वो चीज़ आ रही है। अगर ये ग्रीन फ्यूल यूज़ किया गया तो पैसे किसानों के पास जाएगा, तो किसान समृद्ध हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे भारत में जो वेल्थ सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने के चांसेस आज के समय में है। तो निश्चित आपने बहुत ही अच्छी बात बताया। अर्चना जी, मैं चाहूँगा कि एक आध सवाल आप पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिए सर से, फिर हम लोग पूरा करते हैं। जी। यस, विश्वनाथ जी, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन चल रहा है। इनफैक्ट बहुत ही अलग लेवल का कॉन्वर्सेशन है, बिकॉज आपके जो एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइजेशन जो है ये फील्ड में, इससे एक दूसरे ही वर्ल्ड में लेके जा रहे हैं आप हमको कि बहुत डीप में जाके हर एक चीज़ को सोचने के लिए। जैसे आपने साइंस, ह्यूमिलिटी and think of what you don't know, and then try to make an attempt to know, and then observe and analyze, and so it's a strategic planning जो आपने बताई है। So I'm sure सारे ऑडियंस को एक नया तरीका मिला है आज आपसे जानने को, कि जो हमारे पास अबंडेंट रिसोर्सेज है कंट्री में, उसको अबंडेंट वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करें। सो सिंस दिस इज द टॉपिक जो आपने लिया है, सो एक कोई सिंपल सी टिप दे सकते हैं हमारे फार्मर्स को, या जैसे हमारे आपने कहा कि agriculture is the land that we have in our country. It's the biggest resource that we have, and most of the 80% of our population in villages. So what is the one thing that if you were given a chance to move a magic wand on the earth of in the country, तो आप क्या करना चाहेंगे जिससे देश की उन्नति हो सके? वन स्मॉल थिंग जो हमारे ऑडियंस सुने, एंड दे कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। सिंपल से चीज। Simple but hard. Okay, simple but hard. ओके, Begin. मतलब आरंभ करो, जो भी करना है। बहुत सिंपल चीज है। अगर कविता करनी है, सपोज तस्वीर निकालनी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, केमिकल कैटलिस्ट बनाना है, आरंभ करो। और पहला कदम तो इट विल बी ह्यूमिलिएटिंग। मतलब you're going to you're going to be bad at it. Whatever you begin, you're going to suck at it. You're going to be bad. Begin nevertheless. Humility and courage. People will laugh at you. You want to dance? You want to learn to dance? Dance badly. You want to learn to draw? Draw badly. You want to learn to invest? Invest badly. You want to learn to farm, garden badly. People will laugh at you. You want to write a poem? Write a bad poem. But start.
how many projects in the country are not attempted because people think that that others will laugh at them. So if there was a magic wand that I had, I would remove the inhibition to begin. That would be that is something I would like very much that people do. If they would begin and The not things will mind. work startup. Yeah. जी, साइंटिफिक मेथड को यूज़ करना चाहते हैं। बहुत सारे अभी तक साइंटिफिक मेथड्स बताए गए हैं, लेकिन वो कितने तक कामयाब हुए हैं, ये हर व्यक्ति अपने जो जिसने इम्प्लीमेंट किया उसको मालूम है। लेकिन चीज़ें जो है जब तक आप करते रहेंगे तब तक चीज़ें जो है आपके हाथ में आ जाएगी और करने के लिए थोड़ा-सा हिम्मत भी चाहिए। जैसे विश्वनाथ दलवी सर ने बताया, अगर पोएम लिखना है तो पहले आपको पता ही नहीं कि लिखना कैसे है, लेकिन मोटे-मोटे तौर पे आपके विचार आपको प्रेरित करेंगे और आप उसको स्टार्टअप कीजिए। और जब तक स्टार्ट करेंगे तब तक भी बहुत टाइम हो जाता है, लेकिन हिम्मत करके जिस दिन स्टार्ट करते हैं तो वो चीज़ें आप लिखना शुरू कर देंगे और फिर वो लोगों के बीच में जाएगा। तो निश्चित तौर पे कुछ लोग हँसी उड़ाएँगे, कुछ लोग बताएँगे कि ठीक लिखा है, कुछ लोग नहीं बताएँगे। तो एक स्टार्टअप करना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्टार्ट कर देते हो तो उसके बाद आपको बहुत सारे और ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों एक क्वेश्चन आया था सुभाष जी का, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्या साइंटिफिक पावर्स के साथ में साइलेंस पावर्स ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है। जब आप साइलेंस रहेंगे तो साइंटिफिक मेथड को ढूँढ भी पाएँगे, बहुत सारी वेरिएशन आप देख पाएँगे उसमें। अगर आप खुद शांत नहीं है, आप कन्फ्यूज़ हैं या जल्दबाज़ी करेंगे तो चीज़ें आपके हाथ में हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप शांति के साथ ही साइंटिफिक मेथड की वैराइटीज़ को देख सकते हैं, अलग-अलग ऑप्शंस को आप देख सकते हैं। जैसे सर ने कहा कि आप बहुत सा अलग-अलग वैरायटी तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, एक एंगल से नहीं सोचना है, चारों ही एंगल को एक चीज़ को आपको सोचना पड़ेगा, तब जाके आप सही चीज़ जो है बना पाएँगे और सही चीज़ लोगों को दे पाएँगे। तो इसलिए निश्चित तौर पे हमारे पास बहुत कुछ है और बहुत कुछ होने के बावजूद हमें करना क्या है ये जानना है और करते जाना है। करने के लिए आप प्रेरित रहें और करते जाएँ, तो चीज़ें आसान होगी। और जैसे बहुत ही अच्छा तरीका बताया सर ने, वेल्थ कैसे पा सकते हैं, तो जैसे आप गाँव छोड़ के शहर आते हैं, शहर में आने के बाद नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो नौकरी जैसे ही शुरू कर देते हैं, वैसे ही आप अपना शेयर मार्केट भी उसमें भी अपना इन्वेस्टमेंट जो है शुरू कीजिए, ताकि आपका एक बहुत बड़ा जो है ना समय के बाद सिस्टमैटिक प्लान जब आप करते हैं, तो वो बहुत बड़ा वेल्थ आपको देके जाता है। तो वो भी चीज़ें आपको खुद करना है और जब आप खुद करेंगे, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा और आप अपने लाइफ के हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को बना के रख सकते हैं। तो विश्वनाथ सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बातें आपने बताया एंड आशा करता हूँ मैंने थोड़ा बहुत क्लब अप किया आपको सुनकर। और फिर से हम लोग जो है वापस मिलेंगे कुछ नई बातें इसी तरह का लेकर। थैंक यू अर्चना जी, आपने विश्वनाथ जी को जोड़ा हमारे साथ में और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। चलिए दोस्तों, आज हमने जिस तरह से बिल्डिंग वेल्थ के बारे में विश्वनाथ दलवी सर से सुना, कुछ चीज़ें आपको नोट करके रखिएगा और जब भी आप इस एपिसोड को फिर से रिपीट करके देखेंगे, तो शुरुआत वाले और बीच में उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया, उन चीज़ों को ज़रूर पॉइंट आउट करके देखिए, तो शायद आपको काम करने में आसान होगा, क्योंकि थोड़ी-सी टेक्निकल शब्दों का प्रयोग किया गया, इंग्लिश में सर ने बोला है, लेकिन वो बहुत आसानी और सिंपल तरीके से समझ जाएँगे कि आपको करना क्या है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, बस उसको यूज़ तो करना है। जैसे चाबी है, कबाड़ है। अब चाबी अगर हुई है या नहीं है वो चेक करना तो आपको है ना। तो चाबी को लेके कबाड़ में जो ताला है उसको प्रॉपरली आपको घुमाना पड़ेगा और नहीं है तो चाबी को थोड़ा चेंज करके देखिए, दूसरा की यूज़ कीजिए, पहला की नहीं लगा तो तीसरे में या चौथे में या छठवें में तो खुल ही जाएगा, लेकिन ट्राई करते रहना चाहिए आपको, है ना, कि अलग अलग थोड़े से उसको मैनिपुलेट करके यूज़ करते जाएं, तो जिस दिन खुल जाएगा उस दिन आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। हमको कहीं जाना नहीं है, हमारे आसपास ही सब कुछ है और हमको कहीं ढूँढना भी नहीं, वो भी पड़ा हुआ है। बस की को यूज़ करना आता है, है ना?
तो साइलेंस इज ऑल्सो अ बिग की टू द सक्सेस, तो इसकी भी इस्तेमाल कीजिए। कई बार हम लोग जो है ना थोड़ा सा भी अपने लिए टाइम नहीं देते हैं, भागते रहते हैं। मुंबई का दुनिया है, कहते हैं कि मुंबई में जिस तरह से लोकल ट्रेन एक के बाद एक आती जाती है, वैसे ही जिंदगी की दौड़ बहुत रफ्तार से चलती है। तो भागिए मत, थोड़ा सा स्पेस दीजिए अपने आप को, ब्रेक लगाइए और उस चाबी को प्रॉपरली यूज करें। देखिए खजाना आपके पास है। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जल्दी से आप अपने खजानों को प्राप्त करें, ऐसी शुभ आशा के साथ सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।